Hello everyone, welcome to the today's class of the editorial. So the today's topic for the editorial is unending tragedy on US school shootings and gun control debate. The US must impose a ban on assault weapons and expand checks for gun ownership. So as we all know that in yesterday in US there happened shootings at the school. So the today's editorial is regarding that. So the US, what does the author says? The US must impose a ban on assault weapons. Assault means the physical attack. So the US must impose a ban on the weapons which are used for the physical attack on the humans and expand the checks. Checks means scrutinize for the gun ownership. That means who all are owning the guns, whether they are authorized persons or not, whether they are authorized to hold the guns or not. So let's see what does the article says. First, we will go with the vocabulary. So the first word is indigent indigen is pardon. So indigenization, it is derived from the word indigenous. So what does this word? The action or process of bringing something under control, dominance, or influence of the people native to the area. That means to take the things under the control or dominance. That means to dominate. Okay. So it is the adjective form. Next, incubate. Pardon, it should be incubate, not incubate. Please make the correction there. What does that mean? To keep something safe and warm so that it can grow. That means to protect so that it can grow. Next is perish. So the word incubate here is verb. Next is perish. That means die, especially in violent or sudden way. Is we used to talk the perishable items, perishable things like which used to get stale very soon, like fruits, vegetables, right? They used to get stale very soon. That means, but here it means die in a violent or sudden way. That is here also it is used as a verb. Next is outrage, gussa. Okay, an extremely strong reaction of anger, shock, or indignation. Right, anger or the shock, reaction of an anger or the shock is called as outrage. Here it is used as a noun. Next, scarcely, only just or almost not. That means very little, only just. कुछ, सिर्फ कुछ, हम कहते हैं ना कुछ ही क्षण बचे थे. Very right, very scarcely. Here it is used as adverb. Next is grim, phased, grim phased. Okay, having a very serious or gloomy expression. That means, on the face, we used to say he have a grim faced, he has a grim face. Okay, that means he's having a very serious expression on his face. Okay, next, bear arms. That means to serve in the armed force, but here it is used as weapons. Okay, next is lobbying, seek to influence on an issue. That means to dominate or to influence. ठीक है, किसी को आप दबा के रखना, अपनी बातों को मनवाना जबरदस्ती से. That is called as lobbying. Here it is used as verb. Next is fiercely, प्रचंड पूर्वक, in a savagely violent or aggressive manner. बहुत ही aggressive, गुस्से से, बहुत हिंसक तरीके से, in a violent and aggressive manner. That is called as fiercely. Here it is used as adverb. Next is assault, make physical attack on. Okay, hamla, right? That is called as an assault. When we make a physical attack on someone, it is called as assault. It can be used as verb or noun both. Okay. Deep pocketed, a person or an organization having substantial financial resources, means having a lot of money, बहुत ही अमीर, पैसों से भरे हुए, बोलते हैं ना इनकी जेब पैसों से भरी हुई है. Right, that is called as deep pocketed. Having substantial means very much in a large quantity. Having the large quantity, having financial resources in large quantity means they are very rich. An organization or a person. Here it is used as an adjective. Next is stamp out. It is a phrasal verb that meaning is suppress or put an end to something by taking a decisive action. By taking an action, when you put something to an end, is called as stamp out. किसी चीज का हम अंत कर देते हैं, एक डिसीजन लेके कि हाँ अभी इसके आगे हमें नहीं करना है और बस इस चीज को अभी हमें यहीं पे खत्म करना है, इसे आगे बढ़ने नहीं देना है, किसी भी हालत में इसे यहीं पे रोकना ही है. So that is called as stamp out. Here it is used as phrasal verb. Okay, so we have done with the vocabulary. Let's start with the article. The US once again faced the grim consequences of its unwillingness to tackle gun violence at its source when a man shot dead at least 19 children and 2 adults, including a teacher at an elementary school in Uvalde, Texas. Okay, that means the US once again faced the grim consequences. Grim meaning serious. Okay, grim here it is used as serious. That means US once again is facing very serious consequences of its किसके कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस मींस द रिजल्ट्स. यहाँ पे यूएस किस चीज का रिजल्ट झेल रहा है, सीरियस रिजल्ट, खराब रिजल्ट. किस चीज का भुगत रहा है वो रिजल्ट? उसकी अनविलिंगनेस, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी. किस चीज की इच्छा ना होना?
टू टैकल गन वायलेंस। टैकल करना मतलब हैंडल करना, किसी भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना। ऑफ इट्स अनविलिंगनेस टू टैकल गन वायलेंस, उसकी जो इच्छा नहीं थी कि हम गन वायलेंस को रोके, उसका वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, परिणाम भुगत रहा है। एट इट सोर्स मतलब जो वहां पे चल रहा है, एट इट सोर्स मतलब जहां पे, सोर्स मतलब उसका जहां से वो स्टार्ट हुआ है, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अमेरिका में जहां से ये स्टार्ट हुआ है। व्हेन अ मैन शुड डेड, इसके रिजल्ट्स वो अभी उनको पता चल रहे हैं। कैसे पता चला उनको? ये सीरियस रिजल्ट है जब अ मैन शुड डेड, एक आदमी ने जब 19 बच्चों को, 19 चिल्ड्रन एंड 2 एडल्ट्स, दो बड़े लोगों को, इंक्लूडिंग अ टीचर, जिसमें एक टीचर भी थे, उन्होंने शूट कर दिया। कहाँ पे? एट एन एलिमेंट्री स्कूल। एक एलिमेंट्री स्कूल मतलब, एलिमेंट्री इज वेरी प्राइमरी स्कूल, वी कैन से इन लैंग्वेज, प्राइमरी स्कूल पे। कहाँ पे था वो? यूऑलवेड, टेक्सास। टेक्सास पे, जहाँ पे वो, टेक्सास पे एक स्कूल है बच्चों का, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे इस मैम ने शूटिंग स्टार्ट कर दी और 19 बच्चों को और दो बड़े बच्चों को उन्होंने शूट कर दिया। The shooting marks the worst such attack in the US since the Marjorie Stoneman Douglas High School attack in 2018. तो जब ये शूटिंग, ये जो शूटिंग है ये मार्क कर रहा है। मार्क्स मतलब हम कहते हैं ना, टुडे वी आर मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी, टुडे वी आर मार्किंग द डेथ, मतलब याद करना। तो वो क्या याद करता है? द वर्स्ट सच अटैक इन द यूएस। सबसे खराब, वर्स्ट इज खराब, सबसे खराब और डेंजरस अटैक इन द यूएस कब हुआ था यूएस पे? सिंस द मार्जरी स्टोनमैन डॉगलास हाई स्कूल अटैक, ये जो स्कूल का नाम है, हुआ था अटैक 2018 में। इसके बाद से इतना सीरियस कहाँ पे भी नहीं हुआ था, बट अब हो गया है। तो इस अटैक पे क्या हुआ था? स्कूल, जो कि इनका एक पुराना स्टूडेंट था स्कूल का, ये स्कूल कहाँ पे था? पार्कलैंड, फ्लोरिडा में। ओपन फायर मतलब उन्होंने उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी वो स्टूडेंट ने, और उससे क्या हुआ? किलिंग 17 पीपल एंड वुंडिंग 17 अदर्स। 17 लोगों को किल कर दिया और 17 लोगों को जख्मी भी कर दिया। A similar major shooting that led to outrage. Outrage means गुस्सा, जिससे लोगों को गुस्सा आ गया. Yet saw no permanent reform in the gun laws occurred at Sandy Hook Elementary School in Newton, Connecticut in 2012. ऐसे ही एक किस्सा हुआ था न्यूटाउन में in 2012 में, in which 20 first graders and 6 school employees perished. Perished का मतलब खत्म हो जाना, जहाँ पे 20 फर्स्ट ग्रेडर्स, मतलब also shaken the nation, for it comes scarcely 10 days after the shooting at a supermarket store in Buffalo, New York, which officials described as a racist hate crime, killing 10 lanes. तो ये जो यूअल डे में ट्रेजेडी हुई थी, इट हैज शेकन द नेशन, मतलब इसने पूरे देश को झुंझला के रख दिया गया था, ठीक है। क्योंकि तो स्केर्सली 10 डेज आफ्टर, स्केर्सली मतलब कुछ ही दिन पहले, यानी कि 10 दिन पहले ही एक शूटिंग हुई थी सुपरमार्केट स्टोर पे। कहाँ पे हुई थी? जो कि बफेलो, शूटिंग वाला स्टोर इन बफेलो, न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। विच ऑफिशियल्स डिस्क्राइब, वो शूटिंग किस रिगार्डिंग हुई थी? रेसिस्ट हेट क्राइम, मतलब किसी दो जातिवादी गुटों में कोई हेट की वजह से शूटिंग हुई थी, जिसपे 10 लोग मारे गए थे। ओवरऑल देयर हैज बीन एटलीस्ट 26 स्कूल शूटिंग्स इन 2022। अगर हम सभी पूरे 2022 का अगर हम डेटा लेते हैं तो 26 स्कूलों में शूटिंग्स की गई है। एंड एटलीस्ट 118 इंसिडेंट्स इन 2018, 2018 से 2022 तक 118 बार शूटिंग के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दैट हैव ट्रैक्ड दिस स्टैटिस्टिक ओवर द पास्ट 4 years। पास्ट 4 years जो भी हमने डेटा को अगर हम ट्रैक करते हैं तो 118 इंसिडेंट्स अकर हुए हैं शूटिंग के। लास्ट ईयर विटनेस 34 स्कूल शूटिंग्स, पिछले साल 34 स्कूल शूटिंग्स हुए थे, 34 टाइम्स शूटिंग्स हुई थी, द हाईएस्ट नंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड। देयर वर 24 इंसिडेंट्स ईच इन 2019 एंड 2018 इन एंड 10 इन 2020। तो 24 इंसिडेंट्स हुए थे 2019 में, okay? और 2018 में 10 इंसिडेंट्स हुए थे। सॉरी, पार्डन 24 इंसिडेंट्स हुए थे ईच, 24 हुए थे 2019 में और 24 हुए थे 2018। So 2018 and 2019 there were 20 of shootings in the USA, and in 2020 there were 10 incidents of shooting. Okay, next. Addressing after the Uvalde attack, US President Joe Biden made an urgent plea. So जब इस इंसिडेंट के बाद जो यूएस है, जो बाइडेन, उन्होंने एक अर्जेंट प्ली मतलब रिक्वेस्ट किया फॉर कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म की, जो ये जो शूटिंग्स के ऊपर है हमें रिफॉर्म लेके आने होंगे। When in God's name we are going to stand up टू द गन लॉबी, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। भगवान के नाम पे ये सभी कुछ रोक दो। हम कब तक आखिर गन, वी आर गोइंग टू स्टैंड अप टू द गन लॉबी। गन लॉबी मतलब बंदूक की नोक पे जो दबा के रखते हैं, ठीक है, बंदूक के नोक पे जो वायलेंस होता है, कब तक हम इसे झेलते रहेंगे? आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं थक गया हूँ इसे, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और थक गया हूँ इसे। वी हैव टू एक्ट, हमें इस पे कुछ ना कुछ करना ही होगा। These kinds of mass shootings rarely happen elsewhere in the world। इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं, शूटिंग्स होते हैं, कहीं और तो नहीं होते हैं वर्ल्ड पे। हम सबको पता है अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, लीडिंग इकोनॉमी है। सो उस देश पे ऐसे सब इंसिडेंट्स का होना एक बहुत ही बुरी बात है। तो इसलिए वो जो बाइडेन कहते हैं
कहीं पे भी शायद ही कहीं ऐसा सब ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे। इट्स टाइम टू टर्न दिस पेन इनटू एक्शन। अब जो ये दर्द है हमें इसको एक्शन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इस पे कुछ ना कुछ हमें बदलाव लाना ही होगा। Yet it would be unrealistic hope for a meaningful change in the US's view on the Second Amendment, which assures citizens to the right to bear arms. So ये तो कहते हैं कि ये एक अनरियलिस्टिक होप होगा। अनरियलिस्टिक मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं होगा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। किसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल नहीं है? फॉर अ मीनिंगफुल चेंज इन द यूएस व्यू ऑन द सेकंड अमेंडमेंट। जो ये सेकंड अमेंडमेंट है यूएस का, जो अश्योर करता है वहां के सिटीजन को टू बेयर आर्म्स। बेयर आर्म्स मतलब यहाँ पे कि वो घर पे अपने आर्म्स रख सकते हैं, आर्म्स को यूज कर सकते हैं। उसको चेंज करना ये तो मतलब एक अनरियलिस्टिक सी बात है। क्यों अनरियलिस्टिक सी बात है वो हम आगे देखते हैं। सेवरल प्रेसिडेंट्स मोस्टली डेमोक्रेट्स, ठीक है, वहां पे हम पता है ना, जो डेमोक्रेट्स और ये अलग अलग पार्टीज होते हैं, तो जो डेमोक्रेट्स के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट्स हैं have tried and failed to get even basic control laws passed through the Congress. सो कई बार फेल हो गए हैं बेसिक लॉज, जो एलिमेंट्री लॉज होते हैं, शुरुआत के लॉ। बड़े बड़े पेनल्टीज और वो तो दूर की बात है, जो बेसिक से होते हैं कि किन किन को अलाउ करना चाहिए, किन किन को नहीं करना चाहिए। सो ये बेसिक लॉज भी वो पास करने में फेल हो गए थ्रू इट्स कांग्रेस। मतलब वहाँ के जो सदन है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, उनसे वो पास नहीं करवा पाए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा फॉर एग्जाम्पल came away frustrated after Capitol Hill. Capitol Hill यूएस की सदन को कहा जाता है। ओके, द पार्लियामेंट ऑफ यूएस इज कॉल्ड कैपिटल हिल। रिजेक्टेड नो फ्यूअर देन 17 अटेम्प्ट्स बाय हिज व्हाइट हाउस to bring common sense gun control to the floor Congress। ठीक है, तो बराक ओबामा ने 17 टाइम्स अटेम्प्ट किया था कि कोई कुछ वो लॉज ला सके गन कंट्रोल के रिगार्डिंग, बट वो फेल हो गए। ओके, आफ्टर ट्राइंग 17 टाइम्स टू ब्रिंग कॉमन गन कंट्रोल लॉज, बराक ओबामा फेल। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स, कंजर्वेटिव मतलब ट्रेडिशनल का, जो पुराने लॉ मेकर्स हैं, seek to score political points by fiercely defending the constitutional right to bear arms। तो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो है वहाँ के सदन, वो क्या मानते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमने पढ़ा था ना सेकेंड अमेंडमेंट, जो उन्हें अश्योर करता है टू राइट द बेयर आर्म्स। तो वही कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि ऑथर हमें कह रहे हैं कि वो किस लिए रूल को पास नहीं करवाना चाहते हैं, ताकि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए। पॉलिटिकल पॉइंट्स मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए वहां की जनता का। इट इज कॉमन नॉलेज नाउ दैट एट द हार्ट ऑफ द यूएस कांग्रेस refusal टू स्टैम्प आउट मतलब किसी चीज को रोक देना। स्टैम्प आउट किससे रोकना? गन वायलेंस को इन स्कूल्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस। इज शैडोई लॉबिंग ऑन द कैपिटल हिल बाय डीप पॉकेटेड एंड वेल नेटवर्क नेशनल राइफल एसोसिएशन अलॉन्ग विद देम द एंटायर गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सब ये यूएस कांग्रेस तो चाहते हैं कि इसे हम रोक दे, बट वो किससे लॉबी हो रहे हैं? शैडो लॉबिंग मीन्स as I have explained, to gain the control। ओके, सो एज आई हैव एक्सप्लेन, लॉबिंग मतलब किसी को किसी पर रूल करना, अपने अंडर दबा के रखना। सो ये जो लॉज लॉज है वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये जो कैपिटल हिल है वहाँ की सदन को दबाया गया है। किन किन से? टी पॉकेटेड मतलब जो ये अमीर लोग हैं, और वेल नेटवर्क नेशनल राइफल एसोसिएशन, राइफल्स मींस ये जो बंदूक है इनका जो एसोसिएशन है वो, और पूरी जो गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सभी मिला के शायद उनके पॉलिटिकल जो मेंबर्स हैं उनको पैसे देते होंगे, या फिर उन पे इन्फ्लुएंस करते होंगे कि आप ऐसे कोई भी लॉ मत लाइए, वरना फिर इनका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां पे ये लोग लॉबिंग करते हैं, दबा के रखते हैं वहां पे कि लॉस पास ना हो और इनका धंधा चलता रहे। नेक्स्ट, इफ मिस्टर बाइडेन जेन्युइनली विशेस टू क्लैम्प डाउन ऑन दिस वायलेंस, जो मिस्टर बाइडेन है जेन्युइन मतलब अगर सच्ची में चाहते हैं कि ये वायलेंस पे वो कुछ कर सके, उस वायलेंस को वो रोक सके, व्हिच हैज राइप इनटू, राइप मतलब हम कहते हैं राइपन मैंगोज, मतलब जो पके हुए, यहाँ पे राइट इनटू अमेरिका सोल फॉर सेवरल जनरेशन। जो यहाँ पे जो ये पका हुआ मतलब जो कि ये डीप रूटेड है वायलेंस इनटू अमेरिका सोल। कहाँ पे डीप रूटेड हो चुका है? अमेरिका सोल मतलब अमेरिका के आत्मा में नहीं घुस गया, मतलब ये कहते हैं ना बस चुका है, फैल चुका है। ये जो फैल चुका है ये वायलेंस अमेरिका में सेवरल जनरेशन से ये फैल चुका है। उसको अगर वो रोकना चाहते हैं तो he may have no choice but to follow in Mr. Obama's steps and use his presidential power of executive actions to enforce gun control measures। तो मिस्टर बराक ओबामा ने भी कुछ स्टेप्स लिए होंगे अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स को यूज करके, उन्होंने कुछ लॉज कुछ मेजर्स लाए होंगे अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स को यूज करके। तो वैसे ही मिस्टर बाइडेन को अगर वो सच चाहते हैं कि ये जो डीप रूटेड इशू है जो फैल चुका है अमेरिका में, अगर उसको कंट्रोल लाना चाहते हैं, तो हमने तो जैसे पीछे पढ़ा, हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि ये जो डीप पॉकेटेड लोग हैं राइफल इंडस्ट्री के, वे तो नहीं चाहते हैं रूल्स को पास करना। तो अभी मेंबर्स भी सभी वहां पे लॉबी हो रहे हैं, वहां के उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, वो पास नहीं करेंगे लॉ। अब मिस्टर बाइडेन के पास एक ही ऑप्शन है, नो चॉइस बट टू फॉलो। एक ही ऑप्शन है कि वो अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स को यूज करके ये लॉ एनफोर्स कर दे, इस लॉ को विद इफेक्ट में ला दे।
These should at minimum include an assault weapons ban, expanded background checks for gun ownership. तो इसमें एटलीस्ट मिनिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, चलो ठीक है, जो सजा होती है फाइन होती है वो तो बात की बात, मिनिमम जो चीज इस पे इंक्लूड होना चाहिए वो होता है असल्ट वेपन्स बैन, जो फिजिकल अटैक होता है वेपन्स यूज करने के लिए उस पे बैन हो जाए. So these should at minimum include an assault weapons ban. That means the weapons used to make a physical attack on the people, expanded background checks, that means scrutinize for the gun ownership. That means who are the people? Are they are they legally having a legal right to own the gun, and boosted funding for federal enforcement agencies regulating the gun. All the measures, what should be included in these measures. That means there should be a complete ban on there should be a complete ban on the assault weapons, and there should be a check for the ownership of the gun, and we should that US should boost the funding for the agencies that regulate. That means that control this gun proliferation. Okay, gun proliferation means this illegal usage of the guns. Okay, the agency which controls this, which regulates this, for them we should boost the funding. The US should boost the funding. Because if the funding is properly done to such agencies, then it will be helpful for them to enforce the laws and to work properly. Okay, so this was it for the today's editorial class. Hope you liked this session. Please, if you like the session, do hit on the like button, and please be connected in the description section. I will be updating many links in the description section. I will be uh, I will be welcoming your feedback. Thank you, and stay connected.